guys, good morning. My name is Vikrant Nilkanta Meshram. I'm currently working as assistant professor in School of Hotel Management and Catering Technology, Jaipur National University. I'm serving this industry, hotel industry, as well as academic industry from last 16 years. And I have worked with many brands like Taj, Hyatt, Ramada International, Park, etc. My specialization subject is front office, and that's why I used to teach front office operations, front office management, and now I'm going to teach you as a front office foundation. In first year, you are going to learn in first semester, and for second semester you are going to learn front office foundation 1 and front office foundation 2. These subjects you are going to learn. Okay, guys. We'll start with some topics today. It is related with front office foundation. I'll start from definition of the hotel. What is the definition of the hotel? What is the introduction of the hotel? Basic introduction of the hotel, and the various sections of various major and minor departments of hotel, which actually makes a hotel a five-star hotel. Okay. Later we are going to see the various departments as well as various sections of front office departments, subdivision of front office department. Later we are going to see that what are the various functions, what are the various operations done by front office department. Later we are going to see which are our hotel guest, what is the profiling of what is the category of hotel guest. Next we are going to see the guest cycle, and later we are going to see the various equipment and various devices, various furnitures used in front office department, because you have to have knowledge about the various equipments, because you are going to deal with the with these accessories, with these devices later on, with these gadgets later on. Therefore you have to have basic knowledge about the handling. So what are these equipments we are going to see in this topic? Okay, guys, then we'll start from definition of hotel. As per British law, a hotel is a place where a bona fide guest or a traveler who received food and shelter, food and accommodation. Shelter matlab accommodation, food and shelter facility provided. He have to pay for that, and he is in a healthy and fit condition to receive all these facilities, all these services. तो ब्रिटिश लॉ के अनुसार ये एक डेफिनेशन है होटल की, क्योंकि होटल की जो शुरुआत हुई थी वो जनरली न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में ही हुई थी, तो ये डेफिनेशन को वहीं से लिया गया है, उनके लॉ के अनुसार लिया गया है कि होटल इज अ प्लेस जहाँ पे फूड और खाने की और रहने की दोनों की सुविधा होती है जी. अब टू सर्व द पर्पस ऑफ फूड एंड शेल्टर we generally have to have 4 departments. One department, 2 departments actually. 2 departments generally deal with the accommodation part, and 2 departments generally serve the purpose of food part. So front office as well as housekeeping department generally serves the purpose of accommodation services. Like the housekeeping department generally, this department generally works for the neatness, cleanliness, to maintenance of the hygiene, and to upkeep the aesthetic value of the entire hotel. It is also deal with the interior decoration of the of all the guest rooms of the hotel. Accordingly, front office department also deals with the accommodation services. It bring the customers, it bring the guest clients for the guest rooms. It brings the business for the hotel. So these 2 departments deal with the room part, accommodation part. The another 2 departments like food production, also called as kitchen department. It deals with the preparation of food, preparation of various beverages. तो ये डिपार्टमेंट जो है प्रिपरेशन का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है. The another department is food and beverage service department. This department generally serve the purpose of services. बहुत सारे होटल्स में आपने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, मल्टी किचन रेस्टोरेंट्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, तो बैंक्वेट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, दिस ऑल कम्स अंडर दिस डिपार्टमेंट. और जनरली
इस डिपार्टमेंट का काम यही है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में, बहुत ही कटियस वे में वो आपको फूड सर्व करे प्रोफेशनली। ओके, तो ये 4 मेजर डिपार्टमेंट है। मेजर इसलिए क्योंकि दे आर सर्विंग दे आर सर्व द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ होटल, और ये मेजर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट भी है होटल के। तो इसमें से ही जो डिपार्टमेंट है वो है अपना डिपार्टमेंट, दैट इज फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। इसके अलावा और क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, ये मेजर डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे माइनर डिपार्टमेंट है, नॉन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स भी है। वो क्या क्या है और उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, उनका क्या पर्पस है होटल में। द अनदर डिपार्टमेंट इज इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। As name indicate, as name suggest, I hope you understand what is the meaning of engineering and maintenance. होटल में जितने भी इंजीनियरिंग का या मेंटेनेंस का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, दिस डिपार्टमेंट डील्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अकाउंट सेक्शन। होटल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश या फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, दिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली डील्स विद इट। इवन होटल स्टाफ्स, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सबकी सैलरी, उनके वेजेस की देखभाल करने का काम भी इसी डिपार्टमेंट के जिम्मे है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एज पर नेम सजेस्ट, दिस डिपार्टमेंट इज responsible for the services, for the security all over the hotel property, entire building, in-house guest, all the staff members, etc. This department is responsible for the secure or the surveillance in the entire hotel. Next department is HR department, human resource department. This department basically works for recruitment, promotions, training and development of their staff, of their manpower. होटल में जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं। इस डिपार्टमेंट का सब सेक्शन और है जिसको पर्सनल डिपार्टमेंट या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नाउ दिस डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बिकॉज दिस डिपार्टमेंट डील्स डायरेक्टली promoting your hotel products, promoting your hotel. And this department is closely coordinating and closely working with the front office department also. The next department is purchase department, and as per name indicates, this department is responsible to procurement all the services, all the facilities, all the products. For example, for F&B service department, they generally required crockeries, cutleries, glasswares. So this department brings all the services, all the products for them from outside of the hotel. Okay guys, now slowly we are going to turn to front office department, and as per the name suggests, why it is called as front office? Because generally this section located in the lobby nearby foyer. I hope you understand the meaning of foyer. Foyer means nearby entrance, which is which is clearly visible to all the incoming and outgoing guests, to all the officers, to all the staff members, and pattern of the hotel. So that's why, because of the location of this department, it is called as front office department. This department also called as nerve center or face of the hotel. Why it is called as nerve center or face of the hotel? Because the services offered here to their consumer, to their customers, gives the first and last impression to the consumer. जो सर्विसेज यहाँ पे कंज्यूमर को मिल रही है, कस्टमर्स को मिल रही है, वो अच्छी सर्विसेज है तो वो फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन है होटल का गेस्ट के ऊपर। अच्छी सर्विसेज है तो अच्छा इंप्रेशन है, और सर्विसेज अगर पुअर है तो पुअर ही इंप्रेशन जाएगा कि इंटायर होटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली है वो पुअर ही सर्विसेज होंगे। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन जो होता है, यही डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है, यही डिपार्टमेंट देता है गेस्ट को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नर्व सेंटर। एंड again, I already said, this department brings the business for not only for front office department but also for entire hotel.
बिकॉज गेस्ट जब होटल में स्टे करता है तो ऑब्वियसली वो बाकी सर्विसेज भी यूज़ करता है, वो रूम सर्विस भी यूज़ करता है, वो रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ भी यूज़ करता है, वो बेवरेज फैसिलिटीज़ भी यूज़ करता है, वो बैंक्वेट फैसिलिटीज़ भी यूज़ करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So that's why it is called as a nerve center of the hotel. Guest rooms is the main product of front office department, selling of guest room, and because of that, two-third of revenue is generated. Two-third of revenue of the entire revenue is generated from the room selling, guest room selling. Okay, guys. Now we are going to see what are the various functions or operations done by front office department generally. The major functions are doing reservation. I hope you understand the meaning of reservation. Reservation means advance booking. होटल्स में जनरली जितने भी गेस्ट आते हैं 70 to 80% जो गेस्ट आते हैं वो प्रायर एडवांस बुकिंग करके आते हैं, जिसको रिजर्वेशन कहा जाता है. ये एडवांस रिजर्वेशन और एडवांस रिजर्वेशन या एडवांस बुकिंग जो है ये होटल के गेस्ट रूम की भी हो सकती है, बैंक्वेट हॉल्स की भी हो सकती है, या ये कि रेस्टोरेंट बुकिंग भी हो सकती है. किसी भी तरह की बुकिंग जो है ये फ्रंट ऑफिस के थ्रू ही होती है. Next function of front office department is registration, which is generally done on reception desk. Registration is a type of facility which is done on reception desk, जिसमें जनरली गेस्ट को रजिस्टर किया जाता है और उन गेस्ट को who is already reserved their rooms and they have arrived in the hotel as per the hotel standard hotel check-in time, और उनको रजिस्टर किया जाता है. रजिस्ट्रेशन कार्ड उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अपने डिटेल फिल करते हैं, अपना पर्सनल डिटेल फिल करते हैं, अपने सिग्नेचर पुट करते हैं और अपने आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करते हैं. इसी प्रोसेस को चेक इन प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, जो जनरली रिसेप्शन डेस्क पे होता है. ये फंक्शन भी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है. इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है अराइविंग गेस्ट के लिए, दैट इज गेस्ट रूम एंड रेट असाइनमेंट. एज पर हिज लाइकिंग, एज पर हिज एडवाइस, हम उनको उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के अनुसार वो रूम प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो रूम रेट है उस रूम के वो हम असाइन करते हैं उनके अकाउंट में. नेक्स्ट विल ट्राई टू फुलफिल गेस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट. स्पेशल रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे बेबी सिटिंग भी हो सकता है. अगर कोई फैमिली है उनके साथ छोटा बच्चा है एंड दे रिक्वायर बेबी सिटिंग फैसिलिटी टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, तो बेबी सिटिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल. ये स्पेशल रिक्वेस्ट में आता है. ऐसे ही कोई ओल्ड एज पर्सन है फैमिली के साथ who is feeling very hard to walk, तो उनके लिए व्हील चेयर फैसिलिटी भी होती है. ये स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल रिक्वेस्ट हो सकती है गेस्ट की. उसके बाद update room status. You have to update after checking procedure, after registration procedure. You have to update the room status. You have to update the room status function because you have to know what is the current room status position. How many rooms are occupied? How many rooms are going to checking out today? How many rooms are going to expected arrivals? How many rooms are amended? Okay. So you have to have knowledge how many vacant rooms you have for sale. तो रूम स्टेटस अपडेट किया जाता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे या होटल रजिस्टर पे. उसके बाद जो मेजर फंक्शन है, मेजर ऑपरेशन है कि मेंटेन एंड सेटल्स ऑल गेस्ट अकाउंट्स. गेस्ट के जितने भी बिलिंग पार्ट है, जितने भी गेस्ट ने कैश में या क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस की है, उसको डील करने का काम भी यही डिपार्टमेंट करता है. चाहे वो एंटायर होटल में किसी भी आउटलेट में, किसी भी पॉइंट ऑफ सेल में, किसी भी काउंटर पे जो सर्विसेज ली है, वो सारी बिलिंग जो है वो एक ही काउंटर से चेकआउट के समय गेस्ट को करना होता है डिपार्चर के टाइम पे. तो चेक इन के टाइम पे और चेकआउट के टाइम पे यही वो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट और लास्ट काउंटर जहाँ पे गेस्ट विजिट करता है. Now we are going to see what are the various sections of front office department. बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे रिसेप्शन हो गया. रिसेप्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन डेस्क को ही रिसेप्शन डेस्क कहा जाता है. इस तो फंक्शन एज मे आई हेल्प यू डेस्क, जहाँ पे गेस्ट सबसे पहले जाता है, इंटरेक्ट करता है, अपनी क्वेरी रखता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, दैट इज द रिसेप्शन डेस्क.
किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए गेस्ट जिस डेस्क पे आता है, दैट इज अ रिसेप्शन, which is located in the nearby the foyer in the lobby. Next section is reservation. Reservation is a section. Reservation manager is the in charge of this section, who generally deals, who is responsible for all the reservation queries of the guest. ये रिजर्वेशन क्वेरीज होटल गेस्ट रूम की भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हॉल या बैंक्वेट हॉल की भी हो सकती है, या होटल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें टेबल बुकिंग की भी हो सकती है. ओके. Next section of front office is information. As per name indicate, this department is this section, this subdivision is responsible to give the information of the entire hotel facilities, entire hotel services, as well as this section have to have knowledge about their surrounding as well. This section, this person have to have knowledge about city or the place where the hotel is located. Okay, you have to have basic knowledge about it. जैसे कि जयपुर में कोई होटल सिचुएटेड है, तो जयपुर में क्या क्या साइट सीइंग प्लेसेस है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. तो ये जो सेक्शन है, इन्फॉर्मेशन सेक्शन, जनरली ये हेल्प करता है आपको, होटल के सराउंडिंग के बारे में भी हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ये आपको होटल फैसिलिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म करता है, जैसे कि बैंक्वेट हॉल कहाँ पे है, स्विमिंग पूल के टाइमिंग्स क्या है, स्पा फैसिलिटी कहाँ पे है, उसके टाइमिंग्स क्या है, उनका कोई मेन्यू है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करता है. नेक्स्ट इज कैशियर्स डेस्क, कैशियर्स काउंटर. एज पर नेम्स गिवन, आप समझ रहे होंगे कि जितना कैशियरिंग का काम होता है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट कार्ड में हो, चेक इन के टाइम पे या चेकआउट के टाइम पे, ये कैशियर डेस्क ही हैंडल करता है. The front office cashier is responsible and he is heading this section, cashier desk. Next is telephone operation. Now this section, this is important section, and all the telephone operators are in charge of this telephone operation function or subdivision. जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स है, होटल्स में आने वाले या होटल से जाने वाले कॉल्स है, इधर फ्रॉम गेस्ट रूम्स, इधर फ्रॉम स्टाफ ऑफिसेस, दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर काउंटिंग. The next section is the concierge section and build desk section is responsible for personalized service. This section generally deals with the luggage handling of the guest, arriving guest and departing guest from the hotel. And concierge is dealing with all the personalized services giving to the guest. If it may be to bring the bouquet for the guest, it may be booking of another restaurant, booking a table in outside of the hotel restaurants, and for the local convenience, local transportation, this section is responsible. Also, this department is gives information as well inside the hotel. Next is business center. As per name describing, this subdivision or this section is very important for business clientele और बिजनेस पीपल. बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जितने भी स्मॉल मीटिंग, स्मॉल गैदरिंग्स उनको करनी होती है, दिस सेक्शन हैव अ स्मॉल स्पेस टू अरेंज और टू ऑपरेट स्मॉल मीटिंग्स, स्मॉल बोर्डरूम मीटिंग्स. तो बिजनेस सेंटर में वो सारी फैसिलिटी, सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपिंग मशीन, फैक्स, including Wi-Fi and internet facility, which required in a small conference or boardroom meeting. तो ये जो सेंटर है जनरली बिजनेस पीपल के लिए या बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फायदेमंद है. नेक्स्ट सेक्शन इज ट्रैवल डेस्क. It is generally located in the lobby nearby reception area, and as per name given, this section is responsible for booking of airlines, trains, surface, for example buses, domestically or internationally, and this department also responsible for all the pickup and drop facility for incoming and outgoing guests. The next section of front office is foreign currency exchange. Now this is an added facility given to all the in-house guests.
and given to all the foreigner as well as NRI guest. जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज करने का काम ये डिपार्टमेंट करता है, क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है फ्रंट ऑफिस कैशियर के साथ. Now we are going to see the organization chart or hierarchy of front office department. जहाँ पे अपन देखेंगे कि there are 3 levels in every organization. Top level management, middle level management and low level management. तो ये हायरार्की में हम देखेंगे कि who is working on top level management, who is working under middle level management and who is working under low level management. तो as you can see, जो बड़े hotels है, it is also called as large hotels, which is having 350 rooms and more than that are comes under large hotels. और ऐसे hotels में जो हायरार्की है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का वो इस तरह से होता है, जिसमें फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो हेड करता है डिपार्टमेंट को. ही इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. उसके अंडर में जनरली रिजर्वेशन मैनेजर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर एंड लॉबी मैनेजर, जिसको ड्यूटी मैनेजर भी कहा जाता है, दे आर कमिंग अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. उसके अंडर में जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके अंडर में आप देख सकते हैं रिजर्वेशन क्लर्क, टेलीफोन ऑपरेटर्स, सीनियर रिसेप्शनिस्ट और रिसेप्शन सुपरवाइजर, senior information desk, business center manager, night auditor, senior front office cashier, concierge, and senior bill captain. All these positions comes under the middle level management of the hierarchy of front office department. Lower level में जितने भी trainees हैं या जितने भी co-workers है, जैसे कि operators हो गया टेलीफोन सेक्शन में या business center में, बिल क्लर्क हो गया, कैशियर सेक्शन में जो क्लर्क है वो इसके अंडर में आ सकता है, जूनियर कैशियर्स हो सकते हैं, बेल बॉयज, डोरमैन, ऑल द यूनिफॉर्म सर्विसेज कम्स अंडर लोअर लेवल हायरार्की. तो व्हाट आई वांटेड टू से दैट यू कैन सी द हायरार्की, मतलब कितनी बड़ी हायरार्की है इस डिपार्टमेंट की, फ्रॉम फ्रंट ऑफिस मैनेजर टू ट्रेनीज टू बेल डेस्क ऑपरेशंस. Now we are going to see the various furnitures, various equipments used in this department. You have to have basic knowledge about this because you are going to deal with these equipments and furnitures later on. तो इसमें furnitures के बारे में भी होगा, equipments के बारे में भी होगा और कुछ gadgets के बारे में भी होगा. तो सबसे पहले है front desk. Front desk उसी को कहा जाता है जहाँ पे ये तीनों counters available है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, reception, information and cashier's desk. इन तीनों डेस्क को कंबाइन करके बोला जाता है फ्रंट डेस्क. Next is bell desk and concierge. As I previously told you, this department, this section this counter is generally helping the guest for to handling their luggages at the time of arrival and departure. Next is lobby manager's desk. Yes. Another name for lobby manager is duty manager. He is responsible for all the lobby operations for the hotel. He is responsible for all the incoming and outgoing guests of the hotel. तो उसका डेस्क लॉबी एरिया में ही सिचुएटेड होता है, नियर बाय द फोर. नेक्स्ट जो आपको फर्नीचर या फिर मेटालिक इक्विपमेंट देखने को मिल सकता है, दैट इज रूम एंड रिजर्वेशन रैक. जनरली इस रैक में जितने भी करंट या फ्यूचर के रिजर्वेशन डेटा है वो यहाँ पे होल्ड किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है. नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, ये आप लोगों को पता ही है, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस. यूपीएस स्टैंड्स फॉर, द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. पावर अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इस डिवाइस के जरिए आप अपने सिस्टम्स को ऑन रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑन रख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड इम्प्रिंटर. दिस इज अ स्मॉल डिवाइस. अगर आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन देखी है, उसी तरह का एक छोटा सा डिवाइस होता है ये, जिसमें जितने भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उनको इम्प्रिंट किया जाता है. आप उसको दूसरे वर्ड में फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं. ये एक मैनुअल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये मैनुअल डिवाइस है. मैनुअली इसको हैंडल किया जाता है. और जो एम्बॉस्ड होते हैं, एम्बॉस्ड न्यूमेरिकल्स या एम्बॉस्ड नेम होते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उभरे हुए जिसको बोलते हैं, उस वो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर की,
और उसको इम्प्रिंट करने का, उसको फोटोकॉपी करने का काम करता है ये क्रेडिट कार्ड इम्प्रिंटर। Next is telephone, EPBX and backup devices. EPBX stands for EPBX. The full form of EPBX is Electronic Private Automatic Branch Exchange. It is a telephone software system. जनरली आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर एक्सटेंशन नंबर्स है तो एक रूम से दूसरे रूम में आप जब जनरली कॉल करते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। सेम accordingly the same criteria in hotels also। अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर्स एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, अपने सुपीरियर से बात करते हैं या फिर अपने ऑपरेशनल मैनेजर से बात करते हैं। तो जो टेलीफोन पे बात होती है, इंटरनल कॉल जिनको कहते हैं हम, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो दिस डिवाइस और दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम डील्स विद इट, EPABX सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। नेक्स्ट इज फैक्स मशीन, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, ये उसका फुल फॉर्म है। इसको कभी कभी फैक्सिमाइल भी बोला जाता है। फैक्स मशीन का फुल फॉर्म फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। नेक्स्ट है मेल मैसेजेस रैक। ये मेटालिक या वुडन रैक हो सकता है जो जनरली जितने भी इनकमिंग या आउटगोइंग मेल्स है, चाहे वो होटल के हो चाहे वो गेस्ट के हो, ये यहाँ पे वो सारी चीज़ें होल्ड की जाती है, यहाँ पे रखी जाती है। Next is folio tray. Folio means all guest bills. All guest bills. तो ये जो ट्रे है या ये जो रैक है वो जितने भी गेस्ट के बिल्स है, चाहे वो रेस्टोरेंट के बिल्स हो, रूम सर्विस के हो, बार के हो या किसी भी अदर फैसिलिटी के हो, वो सारे बिल्स को जिनको फोलियो भी कहा जाता है यहाँ पे होल्ड किया जाता है। तो ये अनदर इक्विपमेंट है या अनदर फर्नीचर या अनदर स्टेटस है इसका। नेक्स्ट है लगेज ट्रॉली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल हॉप। बिल बॉय जनरली गेस्ट के लगेज को हैंडल करता है चेक इन के टाइम पे, चेकआउट के टाइम पे। जितने हेवी लगेजेस है उनको कैरी करने के लिए बिल हॉप या लगेज ट्रॉली का यूज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोटिफिकेशन बोर्ड। गेस्ट को या स्टाफ को नोटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में या पर्टिकुलर किसी जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि करेंसी एक्सचेंज के बारे में कि आज डॉलर का क्या रेट है या आज पाउंड्स का क्या रेट है, तो ये गेस्ट को नोटिफाई करने के लिए, मेंशन करने के लिए इस तरह के बोर्ड्स होते हैं जिनको बुलेटिन बोर्ड्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर। जितने भी अपडेटेड या फिल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड्स है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, इस होल्डर में या इस फाइल फोल्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट इज पेजिंग बोर्ड। ये बोर्ड जनरली आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे एक स्टाफ जो है ऐसे बोर्ड को पकड़े हुए खड़ा रहता है और उस बोर्ड के ऊपर मेंशन किया होता है मिस्टर शर्मा, वी वेलकम मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा। तो जो गेस्ट है वो उसको पढ़ के उसके पास आ जाता है। तो दैट बोर्ड इज कॉल्ड एज पेजिंग बोर्ड। उसके बाद है मेल फॉरवर्डिंग फाइल रजिस्टर। नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी एंड इन रूम लॉकर्स फैसिलिटी। यस, टू keep all the expensive items, to secure all the expensive and guest belongings. This facility is there. Security lockers is there, safe deposit lockers are there, and in-room lockers are also there. गेस्ट रूम में ये सारे लॉकर्स की फैसिलिटी होती है और ये पासवर्ड कोडेड होते हैं। जो गेस्ट अपने पासवर्ड कोड खुद इसमें डालता है, इंसर्ट करता है और उनके पासवर्ड से ही ये ओपन हो सकता है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स और फर्नीचर्स हैं जो हमने आज देखे। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर्स है, डिवाइसेस है जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ हम देखेंगे व्हाट इज गेस्ट साइकिल, व्हाट इज गेस्ट एक्चुअली, एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन और प्रोफाइलिंग ऑफ द गेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। That's all for today, guys. We'll see you in the next session. Thank you. Take care. Bye.